हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय एन के दीक्षित। हम लोगों ने 7 लेक्चर्स कवर किए हैं जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज 8th लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोस्टली यूज करते हैं जब टू फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे होते हैं और उनका इंटीग्रेशन करना होता है। बट कुछ इसके स्पेशल केसेज भी हैं जहाँ पे हमें एक सिंगल फंक्शन दिया होता है, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसमें हम सेकेंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या फार्मूला यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, it is very useful method for integration of product of functions। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं वहाँ पे इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो इट इज very useful method for integrating product of functions। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, लेट अस टेक टू फंक्शंस u एंड v। so u into v dx, u and v both are the function in terms of x, then u integration of v dx minus integration of d upon dx u integration of v dx and integration of this whole quantity। this is the formula। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इस फार्मूले की वैलिडिटी। जो फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है ये क्या ये ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, मीन्स उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। तो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी दी है, अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करें और उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे u डॉट v मिल जाए जो कि फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन में, तो इट मीन्स दिस फार्मूला इज करेक्ट। तो टू चेक द फार्मूला, let us find derivative of RHS। तो derivative of this u integration of v dx minus integration of derivative of u with respect to x and integration of v dx that is d upon dx u integration of v dx minus derivative of integration of du upon dx v dx with respect to x। तो जो सेकेंड टर्म दिया हुआ है वहाँ पे इंटीग्रेशन है और उस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का करना है उसी का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो सेम क्वांटिटी है वही बचेगी। और जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसमें दो फंक्शन हैं, एक u और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ v। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो u एंड डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है v का और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें v मिलेगा, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx into du upon dx minus
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकाला तो सेम क्वांटिटी बचेगी du over dx into इंटीग्रेशन ऑफ v dx. So we get u dot v plus du over dx integration of v dx minus du over dx integration of v dx. So the second term and third term both are same with opposite sign. So these are cancel out. So we get u dot v. तो हम लोगों ने u डॉट v इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके ये निकाला था फार्मूला, तो इसका डेरिवेटिव करने से हमें वापस u डॉट v मिल गया। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि ये फार्मूला वैलिड है। अब इस फार्मूले में हमें जो दो फंक्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक को हम फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकेंड फंक्शन लेंगे, बट वहाँ पे सिलेक्ट करते समय कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन लेना है, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी जिससे कि हम इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े हुए हैं उसमें हम प्रेफरेंस देंगे। एक एब्रिविएशन है आईलेट, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड पोजीशन पे है एल, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। Then third one is A for algebraic function, T for trigonometric function, and E for exponential function. तो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, फर्स्ट पोजीशन पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड पोजीशन लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड वन इज अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो इसमें ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और जो बाद में होगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसका हम इस जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हम इस तरह से याद कर सकते हैं, u डॉट पी डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx and integration of this whole quantity. So here u is the first function and v is second function. तो इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उनके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग फंक्शंस को क्यों ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम आई से ई की तरफ बढ़ते हैं तो जो फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन ईजी होता चला जाता है। सबसे ईजी है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन अलजेब्रिक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन जिसका हमें करना है तो वो हम इस ऑर्डर में लेते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा इसको प्रायोरिटी देते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो इट इज ऑलवेज टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। आप इसका कुछ क्वेश्चंस में यूज करके देखते हैं। आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज integration of x into sin x.
तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको सेलेक्ट करना है और सेकंड किसको। तो यहाँ पे x दैट इज द एल्जेब्रिक फंक्शन एंड sin x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें से ऑर्डर में एल्जेब्रिक पहले आ रहा है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। So integration is x integration of sin x with respect to x minus integration derivative of x integration of sin x dx with respect to x. The integration of sin x is minus cos x, negative sign, derivative of x is 1, integration of sin x is minus cos x dx. So it is minus x cos x, here minus sign occurs 2 times, so minus into minus, that is plus, integration of cos x dx. It is minus x cos x and integration of cos x is sin x plus constant of integration, that is c. So in this way we can find the integration of product of two functions. Now I am taking question number 3 from the exercise 7.6. Here we are taking exercise 7.6. So the third question is, the function is given x square e raised to the power x. So as per rule, the exponential function is given in the last, so it is always treated as second function. It is second function and x square is first function. So apply the formula, x square integration of e raised to the power x minus derivative of, integration derivative of x square integration of e raised to the power x dx. So it is x square e raised to the power x minus derivative of x square is 2 times of x and integration of e raised to the power x is e raised to the power x dx. So x square e raised to the power x minus 2 times x into e raised to the power x dx. Here in the second term, we have to apply the same formula once again, because it contains the product of two functions. Again, x integration of e raised to the power x dx minus integration d over dx x integration of e raised to the power x dx. So it is x square e raised to the power x minus 2 times x into e raised to the power x minus integration of derivative of x with respect to x is 1 and integration of e raised to the power x is this. So it is x square e raised to the power x minus 2 times x into e raised to the power x plus 2 times e raised to the power x plus constant of integration, that is c. So here e raised to the power x is common. We can write x square minus 2x plus 2 plus c. This is the answer.
if algebraic function and logarithmic function both are given, so it is given in the question number 4, x into log of x dx, then logarithmic function is before the algebraic function as per Eilert. So here this algebraic function is treated as second function and logarithmic function as first function. So first function, that is log x integration of x dx minus derivative of log x integration of x dx and integration of this whole quantity. So integration of x is x square upon 2 minus derivative of log x is 1 upon x and integration of x is x square upon 2 dx. So x square upon 2 log x minus, here x is cancel out and 1 upon 2, take a constant, take it outside. So integration of x is x square upon 2 plus constant of integration, that is c. So x square upon 2 is common. We get log x minus 1 by 2 plus constant of integration. Sorry, 1 by 2 is taken as common. So it left only 1 here. Yes, 1 upon 2 is correct. Plus c. Sometimes only one function is given, but even then we have to use this integration by parts. Like we do not have any formula for integration of logarithmic function. Question: find the integration of log of x. So to find the integration of log of x, we are taking 1 into log x and log x is treated as first function and 1 is second function. So log of x integration of 1 dx minus derivative of log of x and integration of 1 dx with respect to x. Log of x and integration of 1 is x. So derivative of log x is 1 upon x and integration of 1 is x with respect to x. Here x is cancelled out. So we get x log x and integration of 1 is x. Now take the constant of integration, it is c. So now we have the formula for the integration of logarithmic function, that is integration of log x with respect to x equals to x log of x minus x. In the same way, if any inverse trigonometric function is given, then also we are taking 1 in the product and inverse trigonometric function treated as first function. So we can find the integration of inverse trigonometric function. Right. Question number 13. We have to find integration of tan inverse x. So to find the integration of tan inverse x, take 1 in the product of tan inverse x. So tan inverse x, take it first function and 1 as second function. Apply the formula.
It is tan inverse x integration of 1 dx minus integration of derivative of tan inverse x integration of 1 dx and integration of this product. So we get tan inverse x integration of 1 is x minus derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square and integration of 1 is x. Now the second function which is to be integrated once again. Here if we take 1 plus x square as t, then 2x dx will become dt. So we require 2 in the numerator. So multiplying by 2 and dividing by 2. So x tan inverse x minus 1 upon 2. Here 1 plus x square is taken as t. So we got integration of 1 upon t dt, that is log of t. The value of t is 1 plus x square plus constant of integration, that is c. So this is the integration of tan inverse x. In this way we can find the integration of product of two functions. Which is you can see on the screen like integration of e raised to the power x, a function is given and in the addition of that the derivative of that function is given. So such type of integration we can solve by using the integration by parts also. So see how to solve the question. If any function is given and in the addition of that the derivative of the function is given and e raised to the power x is given in the product of that. In this situation, let us separate these two integrations like this. E raised to the power x fx dx plus integration of e raised to the power x, the derivative of x dx. So in the first integration we are going to apply by parts. So applying, you know, e raised to the power x is always taken as second function. So here first function is fx. So we have fx integration of e raised to the power x dx minus derivative of fx integration of e raised to the power x dx with respect to x plus the second integration, do not apply the formula, write it as it is. Now see what happens. Derivative of fx, that is the derivative of fx is f prime x, integration of e raised to the power x, see, now plus e raised to the power x f prime x dx. Now you can see the second integration and third integration both are equal but with opposite sign. दोनों का साइन अपोजिट है बट इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दे रखे हैं वो इक्वल हैं. So these are cancel out. Then finally we get e raised to the power x into fx plus constant of integration. So in multiple choice questions directly we can write the answer, but in descriptive questions we have to solve in the same way as I have done in this
In place of fx and f prime x, there will be the functions. Fx is any function and f prime x means the derivative of that function. So I am taking some examples to clarify this. This is the question number 16 of that exercise 7.6. The question is, find the integration of e raised to the power x sin x plus cos x dx. So you have to identify which is the derivative of other one. You can see the cos x is the derivative of sin x. Means here sin x is fx and cos x is f prime x. So directly you can tell the formula. If you got the MCQ question, multiple choice question, then the answer will be e raised to the power x into sin x plus c. But we have to solve the question properly. So first of all, separate these two terms, e raised to the power x sin x dx plus e raised to the power x cos x dx. दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेने के बाद जो डेरिवेटिव दे रखा है, मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स वाले टर्म को एज इट इज लिखा रहने देंगे और साइन एक्स जो मेन फंक्शन है हमारा उसको हम बाई पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो वी गेट ई रेज टू द पावर एक्स. इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स. Integration of e raised to the power x dx minus integration of differentiation of sin x integration of e raised to the power x dx. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बाई पार्ट्स मेथड यूज कर लिया और द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x cos x dx. So it is sin x e raised to the power x minus integration of the derivative of sin x is cos x e raised to the power x dx plus e raised to the power x cos x dx. Now you can see the second term and third term both are equal with opposite sign, so cancel out. So the answer is sin x into e raised to the power x plus c. So if a descriptive question is given, then solve it. Otherwise, you can use the formula. If such type of integration is given, then the answer is e raised to the power x into fx. But observe it very carefully that which function is the derivative. Sometimes the derivative is given first and the main function is given in the addition of that. So you can interchange. See the question number 19. That is integration of e raised to the power x 1 upon x minus 1 upon x square. So if we separate these e raised to the power x 1 upon x dx minus e raised to the power x 1 upon x square dx. Now you know what is the derivative of 1 upon x. 1 upon x can be written as x raised to the power minus 1. So derivative of x raised to the power minus 1, that is minus 1 x raised to the power minus 2. So minus 1 upon x square is the derivative of 1 upon x. Now we can write it e raised to the power x 1 upon x dx plus e raised to the power x minus 1 upon x square dx. So the derivative of this function is given here. So it is of the form e raised to the power x fx plus f prime x minus the derivative of fx. So apply the integration by parts in the first term. So 1 upon x is first term. So first term integration of second term, that is e raised to the power x minus integration differentiation of
1 upon x and integration of e raised to the power x dx. Right, the second term as it is. So it is 1 upon x e raised to the power x minus, here the derivative of 1 upon x, that is minus 1 upon x square, and integration of e raised to the power x is this one, plus it is e raised to the power x minus 1 upon x square dx. We have same function in the second term and third term within the integration, but these are the opposite sign. No need to find the integration of these two terms because both are cancelled out. Write the constant of integration. So answer is 1 upon x e raised to the power x plus c. One more question, that is the question number 20 of this exercise. The question is x minus 3 e raised to the power x divided by x minus 1 whole cube. You can see in the numerator the term is given x minus 3 and denominator the term is given x minus 1. Can we make x minus 1 in the numerator? Yes, we can make. Like this, x minus 1 minus 2. We can write x minus 3 as x minus 1 minus 2 divided by the cube of x minus 1. Now, we can write x minus 1 divided by x minus 1 cube into e raised to the power x dx minus, or you can see plus, minus 2 upon x minus 1 whole cube e raised to the power x dx. In the first term, the x minus 1 in the numerator is cancelled out from one time of x minus 1 in the denominator. x minus 1 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में x minus 1 होल स्क्वायर प्लस minus 2 upon x minus 1 whole cube e raised to the power x dx. Now you can see the derivative of 1 upon x minus 1 whole square, that is minus 2 times minus 2 upon x minus 1 whole cube. तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी इसी फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। तो समटाइम्स आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको ये फॉर्म दिखेगी। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली वो फॉर्म दिखती है, जैसे इससे पहले के दोनों क्वेश्चंस में दिख रहा था। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसको बाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन is 1 upon x minus 1 whole square, second function e raised to the power x dx minus integration of derivative of 1 upon x minus 1 whole square, integration of e raised to the power x dx and integration of this product plus minus 2 upon x minus 1 whole cube e raised to the power x dx. So 1 upon x minus 1 whole square e raised to the power x minus the derivative of 1 upon x minus 1 whole square. 1 upon x minus 1 whole square can be written as x minus 1 raised to the power minus 2. So its derivative will be minus 2 upon x minus 1 cube. Integration of e raised to the power x is this, plus integration of minus 2 e raised to the power x upon x minus 1 whole cube dx plus constant of integration
Now, in the second term and third term, the function is same even in the integration, but with opposite sign. So no need to find integration, just cancel out these two terms, both are equal. So the answer is e raised to the power x divided by x minus 1 whole square plus c. So this is a special type of integration. You can solve the questions easily. If multiple choice questions are given, then directly you can write the answer. Otherwise, solve it. Okay, dear students. Now, in the next lecture, I will take some more type of integrals. So wait for that. Thank you.